ओके हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत एक मुख्तलिफ किस्म की वीडियो और एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। आई लाइक टू से दैट आई बिलोंग मोहसिन हमारे साथ है, मोहसिन सईद। और मोहसिन, आई लाइक टू से कि हम लोग जितने भी ब्रांच आउट कर गए हैं टेलीविजन में या फिल्म की कवरेज में या जर्नलिज्म में, लेकिन हमारी कोर जो है स्ट्रेंथ और शौक और पैशन वो हमेशा फैशन रहा है। And right now, after the coronavirus, that has absolutely created havoc all over the world, और जो crisis fashion industry जो face कर रही है, उस पे हम आज बात करेंगे। और बहुत से opposing opinions हैं, of course, regarding fashion. एक school of thought ये है जो सोचता है कि ये एक बिल्कुल बेकार चीज़ है, फैशन की ज़रूरत नहीं है इस वक्त दुनिया को, इसको भूल जाएं, इसको बैक बर्नर पर रख दें, इसके बारे में मत बात करें। जहाँ लोग मर रहे हैं, उनकी हेल्थ की बात है, उनकी सेफ्टी की बात है, हम फैशन की बात क्यों करें? बट वी एज फैशन इंसाइडर्स एंड जर्नलिस्ट, और जो लोग नहीं जानते, वैसे तो मोहसिन सईद को कौन नहीं जानता, मगर इस वक्त ये एंटरप्रेन्योर हैं और इनके affiliation है द पिंक ट्री कंपनी के साथ, which is a fashion label that has revived the love for craft. उससे पहले ये फैशन जर्नलिस्ट थे। मेरी इनकी मुलाकात तब हुई जब ये भी जर्नलिस्ट थे और मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी, और मेरे इनिशियल मेंटोर्स में से एक हैं। फिर कभी कभी इनको पागलपन का दौरा पड़ता रहा तो मेरी इनसे लड़ाइयाँ भी होती रही। तो ऐसा रिश्ता ही क्या है ना मोहसिन, जिसमें लड़ाइयाँ ना हुई हो। एब्सोल्युटली। और इनिशियल मुझे पसंद आया, वाह वाह। ये आपका इंट्रोडक्शन था, बट ऑफ कोर्स मोहसिन नीड्स नो वर्ड्स टू इंट्रोड्यूस हिम। जर्नलिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर हैं, रिवाइवलिस्ट हैं, लव फॉर फैशन है, और एक्टिविस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। इनसे बात करके खुशी होती है। ये अपनी बातें सेंसर नहीं करते, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे करनी पड़े। अच्छी बात यह है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। जी मोहसिन, तो फैशन की जरूरत आज दुनिया को क्यों है? आमना फैशन की जरूरत हमेशा से रही है, उसकी जरूरत को माना नहीं गया है। वी आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड वन ऑफ वेरी नेसेसिटी. Everyone loves the fashion. Everyone practices fashion, follows fashion, but everyone also love to put it down as well, run it down as well. But why is that? I don't know. I've stopped thinking about it. I would like to quote Anna Wintour, which she said in the September issue, that there are people out who are outside are scared of fashion. Okay, yes, they're scared of fashion. That's the best definition or explanation I could ever get, which makes sense. तो मैंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि क्यों होता है मौजूद। I'm sorry मैं बात काट रही हूँ, मगर ये बिल्कुल सही बात है कि people are scared of fashion because of two things. One, it allows people and in our society, women most significantly, even men, it gives them the power of expression, and we like to kill people's expression. We like to put them in and make them conform. And you know why? I'm sorry, I am cutting you in now. I think people are scared of fashion because थोड़े पागल होते हैं fashion वाले, express themselves. They don't give two hoots to society. They do what they like to do. They say what they like to say. They're out there, so they become a soft target. You know, that's why people are scared and they don't know. They don't have that kind of courage, and people are envious of fashion people. So it turns into resentment, and they start putting it down. अच्छा, but very quickly, why do we need fashion? एक तो ये बात है कि एक यूटिलिटेरियन नेसेसिटी है। मेरा नहीं ख्याल ये वीडियो कोई भी देख रहा होगा नंगा बैठ के बगैर कपड़ों। एग्जैक्टली, कोई नंगा नहीं है, तो सब इस हमाम में नंगे हैं, बट वैसे कोई नंगा बैठ के कोई काम नहीं करता। सो नंगा बैठ के अपने जिस्म पे पत्ते चिपका के कोई नहीं बैठा होगा इस वक्त कंप्यूटर के आगे। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जैसे डेविल वेयर्स प्राडा में एना विंटोर अगेन, उसका जो कैरेक्टर है वो कहता है कि यू थिंक दैट व्हाट यू आर वेयरिंग इज अ चॉइस, इट्स एक्चुअली इट इज, बट इट्स आल्सो समथिंग दैट हैज केयरफुली बीन पुट टुगेदर फॉर यू।
तो एक मूवमेंट भी है जिसमें एक्सप्रेशन आता है। और अगर हम फैशन की बात करें पोस्ट कोरोना, so I'd like to also remind every viewer who's skeptical of why we need fashion. सबसे strong movements of art and fashion were after the world wars. Whether it was World War One During or the World World War Two. War, I'd like to interject that during the World War, Paris fashion continued. There were seasons, there were collections, and designers, as a form of resistance, they were rationing of cloth. So they were using more cloth as defiance and resistance, and they were protecting their more about 20,000 artisans and workers. So now I I would like to highlight this point that fashion support thousands and hundreds of thousands of uh, homes, provide livelihood, and we provide livelihood to those and run their kitchens. So एक employment form भी है, हम भूल जाते हैं first. Then fashion is one way to preserve our craft, embroidery and dyeing and block printing, and so many crafts are involved in fashion. And we forget that these crafts have been handed down to us uh, by our ancestors. They've been there, they've survived for centuries, and now it's our duty to hand it over to our next generation. And if we don't incorporate in fashion, where would we incorporate embroidery? दीवारों पे लगाएंगे हम embroidery? नहीं ना, कपड़ों पे ही होगी ना, आपके होमवेयर पे ही होगी ना. Although I'd like to say कि फैशन का एक एस्पेक्ट तो वो है जो गवर्नमेंट पे जाता है। मेरा ख्याल है कि जो आपका पूरा घर है, आपका लाइफस्टाइल, दैट इज आल्सो फैशन। Yes, yes, of course. लाइफस्टाइल है आपकी. आप क्या चादर बिछा रहे हैं अपने घर में, आप कैसे रख रहे हैं, फूल रख रहे हैं, पौधे रख रहे हैं, किताबें रख रहे हैं. एवरीथिंग इज स्टाइल, एंड स्टाइल का एक डेरिवेटिव फैशन है. आप सिर्फ ये पहनना ही नहीं है खाली. मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ चूंकि we are a fashion hating country as well. Although we love to it, अभी recently it's become a profession. इससे पहले तो हॉबी समझा जाता था. और आप क्या करते हैं, मतलब हेलो, I'm a fashion designer, not me, my seniors. I'm a fashion designer. नहीं, और क्या करते हैं, असल में और जैसे असल एक्टिंग में को आपका समझा काम जाता क्या है? हाँ हाँ। है. So or post corona and during corona and post corona, I think it is extremely important to support fashion. Why? और यहाँ जो है हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी आती है. अभी रिसेंटली आई रेड अ स्टोरी जिसमें डिफरेंट पीपल हु ओन डिफरेंट ब्रांड्स वर अपीलिंग टू द गवर्नमेंट कि दे शुड स्टेप इन एंड टैक्स रिबेट्स हो, बिल्कुल हो, सब कुछ हो. But do you think government is interested? No. Government doesn't even know what fashion is, what we are doing, So how we are not important we are we not are. we are not the Italian government that recognizes We are fashion. not. The main Exactly. Which has a fashion ministry, and it is the second largest industry in the world, world. in the country. ठीक Absolutely. है? And I was also reading something about Australia producing 80% of the world's wool. अब वो wool जो है, अभी आजकल उसका harvesting का time है, and the sheep have to be sheared for them to be healthy and happy. अब वो इतना सारा जो wool production है, 80% of the world's production of wool, where is it going to go? And the gentleman जिसका interview में पढ़ रही थी, he was one of the presidents at Woolmark, and he said, where is all this wool going to go if the fashion industry shuts down? And where? Absolutely. We need to understand. देखो, हम लोग we work much in advance. Okay, we didn't know when Corona didn't hit us. We were working on our collections, spring collections, summer collections, Eid collections. Now it's all lying there. Now, who's responsible? Now, who should rise to the occasion? People. People should start buying. And this is not, I'm not saying कि, I'm not appealing to them, I'm just explaining it to them कि देखिए, causes के कई तरीके हैं. A lot of people are contributing to ration distribution. Some people are volunteering. Some people are doing this. This is also a way to support those thousands and thousands of workers and embroiderers and tailors and
because collections are lying there. If once they get sold, they'll be paid. मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि निशात ग्रुप ने has fired thousands of people. So has Rauf Group. They are big mega textile and clothing company. बिल्कुल। So and they're firing. वो मजदूर कहाँ जाएंगे? उनका सोचे तो मेरे ख्याल में तो नाज मंशा का एक हीरे का नेकलेस अगर बेच दिया जाए तो उन मजदूरों को तनख्वाह दी जा But सकती है. most of you and I Whereas know, economically speaking, it doesn't work that way. और जहाँ no, तक no, no. I understand. हम I understand. हम I'm rich I'm man I'm hitting coming. नहीं कर सकते. We can't really begrudge people for being big giants, whatever. उन्होंने जो No, firing no, की no. वो तो I'm not begrudging. Amna, I'm not begrudging. I'm coming to that. Whereas small brands, in fact, compared to Mancha Group, Banto Kazmi is a very small brand. Okay, compared to Banto Kazmi, we are very small brand. The Factory Group. मगर Banto Kazmi और हमने अपने सारे कारीगरों को लॉकडाउन से 2-3 दिन पहले घर भेज के उनको पेमेंट्स कर रहे हैं, उनको घर बिठाया हुआ है, ठीक है ना? बट ये ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता. हम We से कितने need कारीगर हैं scale. आपके आपके साथ कितने कारीगर काम करते हैं? मेरे साथ 40-45 है, तो ठीक आपकी है? छोटी सी और आपका I would say that it's one of the small brands, right? It's या a small brand. स्मॉलेस्ट. तो आपके छोटे से ब्रांड के साथ भी 40-45 लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं. तो आप ये सोचें कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, if we talk about the Gul Ahmeds or the Alkarams or the Sapphires or the Nishad, there are thousands, hundreds of thousands of people. अब जो Absolutely. निशाद किया है वो Absolutely. बिल्कुल So गलत है. what is the solution? What is the solution? The solution is that wheels of economy must start churning. आप ऑनलाइन सेल्स शुरू होनी चाहिए, ऑन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए. दिस इज ऑल्सो कॉज to support those workers, to support those artisans, to support those karigars. आप ठीक है, I'm not saying, and इस वक्त I have noticed that grocery bills have shot up. Okay, थोड़ा सा grocery bill को control करने, and don't buy 4 outfits, buy 1 outfit. Okay, अच्छा, लेकिन but Mohsin, now let me play the devil's advocate a little bit कि general consensus जो है, general opinion on fashion and fashion designers and brands, there is no sympathy for them. There is no sense of इनको बचाना है या इनको मदद करना है because they live such luxurious lives. एक second, इतनी वो luxury की life और आपके जो forefront पे लोग हैं, the ones who make the news are unfortunately people like the Nishad group जिन्होंने 500 लोग फायर किए हैं. No sympathy for them. There are people like Maria B जिनका एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लास्ट मंथ बनी थी जब उन्होंने अपने एक मुलाजिम को कोरोना के साथ भेज दिया था. दैट एंटायर fiasco. Unfortunately, these are the people who are at the forefront of the fashion industry. Where are the reasonable voices? Where are the fashion councils? Where are people who uh, are stakeholders in fashion? Why are they not okay. coming up and saying all of this? All right, let me answer your question bit by bit. Okay, just as you said that we can't begrudge people for being big and mega or groups, we can't begrudge people for living luxuriously so long as they are playing their part. Okay, हमारे यहाँ ये भी है कि जी अगर हम luxury से रह रहे हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं, we start begrudging. As I said earlier, that fashion is a soft target. In anyways हम लोगों का appearance होता है, lifestyle होता है, अंदाज होता है, जो कि yes, people begrudge that. Okay, तो luxury की begrudging तो वहां से आ गई. दूसरी बात आपने ये कहा कि fashion councils का बिल्कुल सही है. There are no fashion councils in. देखिए इस वक्त traders आप देख रहे हैं कि traders are negotiating with the government. Even mullahs are negotiating with the government. Where are designers? Nowhere. Fashion design industry की हमारे यहाँ सबसे बड़ा problem ये रहा है कि there's no unity. I called Maheen and I asked her, I sent her a message, not called, sent her a message, and it's somewhere there in my WhatsApp. And I said, this is the time Fashion Council should speak to the government. And they must. And this is the time all both fashion councils, Lahore and Karachi, and PFTC, Pakistan Fashion Design Council, as well as Fashion Pakistan, should come together, should put their differences aside and work together for the survival of the industry, which employs hundreds and thousands of people. But the problem is
There's no unity. They're not interested. Our problem is, another problem is that we can't rise above our petty egos. Fine. So what to do? हम जैसे लोग क्या करें? कुछ तो करना है ना. मुझे अपने 40 लोगों को तो बचाना है यार, किसी तरह. उनका थोड़ा बहुत तो मुझे तो शायद मेरे अम्मा और मेरे भाई घर पे बिठा के खिला लेंगे. उनका क्या होगा? कुछ तो हमें करना है. हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना. सेकेंडली, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ, कि ये फास्ट फैशन है ना, हम ना, it's damaging us, has caused us so much damage. It has exploited workers. It has added so much kachra waste to the planet. So much so. Now I see, and I was reading a piece that you were talking about that whole. There's a company in Scotland. I'm slipping my mind the name. They they are slow fashion wool. They produce wool products, slow fashion, not fast, which are very expensive. We are also a slow fashion fair trade company. So now the world, I feel, should move back टू स्लो फैशन, जिसका मतलब ये है कि ये हर सीजन वाला कपड़ा पहन के, मैं तो एक दफा ही एक जोड़ा पहनती हूँ. ये फिलॉसफी थॉट खत्म होनी चाहिए. आपको अपने आउटफिट्स देख के कि कौन बना रहा है, किसने बनाया है, वो पेड वेल है कि नहीं है, अच्छी तरह है, लोकल क्या चीजें क्राफ्ट इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है, फेयर ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और क्वालिटी है कि नहीं है. क्योंकि आपके आउटफिट्स हैं शुड लास्ट यू फॉर 5-6 years always. So in a nutshell, ये एक awareness का वक्त है कि आपने खुद बहुत सोचना ज्यादा. है कि आप जब सोच रहे हैं कि जी आपने X नंबर पैसा जो है वो किसी डोनेशन में देना है, तो आप सोचते हैं कि आपने कहाँ देना है. सिमिलरली जब आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आप सोचते हैं कि यार एक गरीब है, उसके साथ मैं ना बार्गेन करूं, जितना वो मांग रहा है Yes, तनख्वाह मैं उसको दे दूं. सिमिलरली आपको ये बिल्कुल. सोचना है कि कौन से ब्रांड्स हैं, आप ब्लाइंडली मत खरीदें. Don't go out and start buying, bulk buying in blindly. Think which are the brands you want to support, which are the brands that are putting some value back into the system. मगर Absolutely. See, economical um, economics see, इसके sustainability के लिए Amna, for instance, we use a lot of gota. Gota is made by hand, और वो खवातीन भी बनाती हैं, बहुत small level पे होता है. We use block printing. These are crafts. If we do not preserve and promote them, they'll die out in front of machine. China का माल सब आके यहाँ डंप हो जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे. नहीं, हमें, जैसे मुझे ख्याल आया, अब आप देखिए कि एक वेस्ट में वो है कि लोकल लोकल उस पे कि आप स्टारबक्स के बजाय आप अपना जो लोकल कॉर्नर नेबरहुड कॉफी शॉप है जो कि आर्टिजन कॉफी कर रहा है, उसको सपोर्ट करें, वहां जाके करें. ये है मूवमेंट चल रही है, यू नो दैट. सो दैट्स व्हाई जैसे कोरोना में हम स्टे सेफ स्टे होम कह रहे हैं, वैसे ही बिजनेसेस में हमें कहना चाहिए स्टे लोकल and stay stay local and stay responsible. stay be responsible, stay local Look at and brands that are support not local. that don't have wastage. Look at brands that are not promoting fast fashion. Look at brands that are Yes, kind to the environment, that are using vegetable dyes as opposed to yes. pesticides, that are अपना utilizing कॉटन इस्तेमाल कर रहे हैं cotton. पाकिस्तान का. सिंथेटिक Yes. की तरफ मत जाएं. All of that. So ये चीजें सोचने वाली हैं. Again, it's about awareness. लेकिन मौसम, एक तो फैशन का पर्पस है कि हम जो बात कर रहे हैं, that is to keep the financial side alive and ताकि डिजाइनर्स और पूरा फैशन इंडस्ट्री मर ना जाए. दूसरी चीज ये है, which people don't really think of, is the psychological and emotional role that fashion plays in our lives. It may be very easy to say कि fashion क्या यार, it's a luxury. It's not. But it's not. No, it makes you feel मैं good. घर पे बैठी हूँ, मैं नहीं निकली घर से, महीना हो गया मुझे. But I made an effort to color my roots and hide my white hair because when I look in the mirror, I want to feel good and feel happy about myself. You want to feel good, you don't want to look down and out and depressed. So fashion, what fashion helps us, it adds color, it adds craft to our bodies, it makes us look good.
and we feel good. When we feel good, we look good. Fashion के बहुत, and fashion is political as well, as we talked about it, as we mentioned in the beginning, that it is an art form. And art जो है वो is a form of expression, चाहे music हो, चाहे literature हो, चाहे अगर आप 200 painting साल हो. चले जाएं पीछे, and we take such pride in celebrating मुगल culture. अब आप मुगल culture में से लिबास और जेवर निकाल दें और मुगलों को नंगा कर दें तो तो चंगा करने तो बच्चे एग्जैक्टली exactly. और आमना, जब आप ये खूबसूरती और हुस्न अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं ना, तो आपकी आदत भी पड़ती जाती है, आपका दिमाग उसी तरह देखने लगता है, आपकी नजर भी खूबसूरती को देखने लगती है, इसी तरह की सब कुछ आपकी जिंदगी में आर्ट, लेट्स कॉल इट आर्ट, नॉट जस्ट फैशन, म्यूजिक, थिएटर, लिटरेचर, सिनेमा, पेंटिंग, स्कल्पचर, फैशन, ये सब आर्ट फॉर्म्स है. और ये आर्ट फॉर्म जो है ना, आपको सेन रखते हैं, यानी आपका दिमाग सही रखते हैं, आपको or सुकून they में give रखते you a sense of individuality. We also talk about fashion as an anthropological tool. हैं. हम क्या इंडिविजुअलिटी जानते हैं क्या है? हमारे तो सबको एक जैसा दिखना होता है, नहीं तो तो फिर इंडिविजुअलिटी की गनीसा बात में है. जाके फिर यूनिफॉर्म खरीदना शुरू कर दे. आप कहें कि जी कोरोना में आपको नहीं जरूरत फैशन की, तो आप जाइए फिर गनीसा और सफेद रंग का आप यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर दें. पूरी दुनिया एक मतलब जैसा क्यों? लगना शुरू कर दे. ये एक गलत सोच है. तुम सही कह रही हो कि ये वक्त जो है हमारे पास कोरोना में, जिसमें हम काम थोड़ा कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, दिन भर जागते हैं, दो रातों को जाग रहे हैं, दिन के बेवक्त गुजारे, कुछ सोचे, कुछ समझे, क्या हमने क्या किया है, किन चीजों की हमें जरूरत है, किन चीजों की नहीं है, हमने नेचर के साथ क्या किया है, दुनिया के साथ क्या किया. We have committed so much atrocities against this planet, the creations which we were supposed to coexist, co-live with. ओके हमने सबको कॉलोनाइज कर लिया है. इंसान ने, कल रात को मेरी उमर से बात हो रही थी, उमर ने कहा इंसान अशरफुल मखलूकात है. मैंने कहा हाँ, खुदा ने तो बना दिया होगा, इंसान ने बनना नहीं सीखा है अभी. When we say अशरफुल मखलूकात, that means we need to learn to live with nature's creations, nature's other children, with नहीं lots of अशरफ love and care and के साथ you know. बात हाँ काट क्या रही. क्या. अशरफुल मखलूकात के साथ एक खाली प्रिविलेज नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी No, भी है. no, it's not a right. No, Yes, it's not a right. not a right. Not at all. बिल्कुल. सिर्फ आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपको ख्याल रखना है. बिल्लियों को ठुड्डे मारते फिरते हैं हम, कुत्तों को मार रहे होते हैं हम, दरख्तों को यूं जब चाहते हैं काट देते हैं. और गरीबों के साथ, हम गरीब को तरबूज लेके बैठा होगा, उसके साथ बहस करेंगे, शनेल शॉप में जाके या गुची शॉप में जाके मुंह बंद हो जाता है. बिल्कुल. एक और मुझे शिकायत है, बल्कि मैंने कहते हैं कि देखा है जो हम लोग. महंगा वाला है वो बेहतर होगा वो खरीदा जाए. लेटेस्ट हाँ लेटेस्ट खरीदना हो, बेशक ज्यादा पैसे देना पड़े. हाँ. अच्छा नहीं, मगर have you noticed that our people, when they come to us, हमेशा बार्गेन करेंगे, but the same people when they shop abroad, एक आवाज नहीं निकलती है मुंह से. Mohsen, but I'll answer that question to you. Not every local brand inspires that sense of value or that sense of trust or that sense of quality in a garment. मतलब मुझे पता All है right, कि now मैं शनेल की जैकेट खरीदूंगी तो उसका बटन नहीं गिरने वाला, उसकी चेन काली नहीं होने वाली, वो फटने you're नहीं वाला, और वो you're absolutely right. फैब्रिक बहुत Abs महंगा है. no, वो क्वालिटी no, मुझे you're शायद ना मिले यहाँ. absolutely right. Now let me answer this question. You're absolutely right. Then find out which brands can inspire that kind of confidence, Exactly. and be an exacting buyer कि ये होगा तो नहीं. Instead of bargaining, अगर आप ले रहे हैं तो आप you have to make sure कि देखिए आप अपना रोल भी तो प्ले करें ना, जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनका भी रोल है. देखो चीप एंड चेयरफुल बहुत चीजें मिल रही थी, मगर एक एंशिएंट विजडम है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार. जी. ओके तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्या ले रहे हैं, किसने प्रोड्यूस किया है, एंड
also हमना एक और बात बताऊं मैं, it's the brand. Don't go कि उनकी क्या चीजें, product is nothing, it's the brand, and brand comes from values of the owners of the brand. हम्म, Okay, find out what their core values are. बिल्कुल. Okay, and if the, and for instance, I ask everyone to, I invite people to come and see my कारीगर shop, workshop, जहाँ हम्म, मेरे लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रांड की कोर वैल्यू है रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी. हम्म, ओके, अगर ये नहीं हो गया, और ये हुआ है पिछले 8 सालों में, सिर्फ एक दफा या दो दफा someone, some a couple of people were disrespectful, I fired them. हम्म. ओके, एंड हमारे यहाँ इक्वालिटी की मैं मिसाल दूं कि मेरा कोई भी कारीगर खड़ा होके मुझे कह सकता है आप गलत हैं, और कहा है गलत है. और अगर मैंने कभी गुस्सा किया है तो मैंने जाके खुलेआम माफी मांगी. मैं और हादिया और मैं, हम एंड शीना, वी मेक श्योर कि रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी remains our core value. बात है हर मोस्टली कि चीज. हर ब्रांड का एक ethos होता है, एक core value होती है. For एग्जैक्टली. example, I don't like Louis Vuitton as a brand because of their philosophies, because of their actions and whatever, how हाँ. post World War II. Plus उन्होंने जो एक African student का डिजाइन चुराया और फिर उसको हाँ. रॉयल्टी भी नहीं दी, और उसने जब केस करने की कोशिश की तो उसको चुप करा दिया. All of that. So I don't like Louis Vuitton as a brand. That left a bad taste in the mouth. It left Similarly, exactly. Tommy Stella Hilfiger ने McCartney, एक for racist example, statement दिया था. I love Stella McCartney as a brand because she's responsible. She She, talks about saving yeah. Earth. She talks about equality. And all of that. So you have to, when you're buying fashion, again, you're a little bit of an activist. Ethos of the brand भी तो मालूम करें. Ethos of the brand, जैसे Tommy Hilfiger ने एक racist statement दिया था. I don't like Tommy Hilfiger. Although I'm a Chanel fan, but when Karl Lagerfeld went and said something about fat people wearing Chanel, it was kind of like, I preferred Chanel, the Coco Chanel wala Chanel, and not Karl Lagerfeld wala Chanel. There's a huge difference, by the way. तो सिमिलरली आप अपने लोकल ब्रांड्स को तो समझ ही सकते हैं ना कि आपको कौन सा ब्रांड आपको अपील कर रहा है, कौन से लोग अपील कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. अगेन मालूम करें ना, be a responsible buyer, be a be a responsible responsible buyer, customer. be a मालूम करें, responsible buyer. पूछें. बिल्कुल. And on that, I am open. अगर मेरे पास आते हैं लोग एंड मुझे कहते हैं आप बहुत महंगे, किसने का बहुत महंगे, मैंने उनको एक्सप्लेन किया, वी आर फेयर ट्रेड, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर स्लो फैशन. हमारे यहाँ हम लोग, और thank God, since I think it pays back to these values, pay back, आमना, क्योंकि मैंने देखा है 8 साल में, अक्सर आपको यह इंडस्ट्री में शिकायत होगी, लोगों से सुनती होगी कि एडवांस मांगते हैं, कर्जे मांगते हैं, ये करते हैं, आज शादी है बेटी की, आज फलाना है तो दे दें, बच्चा बीमार है. ट्रस्ट मी, मेरे यहाँ आके एक तो टर्नओवर हमारा बहुत कम है. एक तो रिमेम्बर ब्रिटिश काउंसिल से मीटिंग वो हुआ था, मेंटरशिप हुई थी 8 महीने की. उसमें एक एक्सरसाइज थी कि हम अपने सब पूरी मार्केट रेट के हिसाब से क्या पे कर रहे हैं. तो 3 साल पहले हमने वी वर पेइंग 38% मोर देन द मार्केट रेट. तो ठीक है, शायद सबको लगा क्यों बेवकूफ है, क्यों पे कर रहे हैं, but it pays back, these values pay back. No worker, they within their own salary or limited budget or whatever, they feel satisfied. That's why they don't come back. They're not beggars. They have dignity. बिल्कुल. They have dignity and we must respect their dignity. बिल्कुल. So yes, I explain it to people. Yes, you may find us expensive, but we are not expensive because we are slow fashion. वक्त लगता है चीज पे. एक जोड़े को चुनने में हाथ से जो है ना 1.5 दिन लग जाता है. उसका भी तो टाइम है, उसका भी तो देना है ना. बिल्कुल बिल्कुल. You don't understand these things. So I urge people to become responsible customer. जी बिल्कुल, responsible customer बने और इस बात को realize करें कि fashion is not just the flashy blonde auntie that you see with the latest Birkin. Fashion is actually, again, thousands, hundreds of thousands of workers. Safed posh, And white it's collar actually workers. sweat and blood.
आर्टिजन्स हैं और कारीगर हैं जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, उनकी रोजियां कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. There is stock in warehouses that needs to be sold to financially empower those people. ये तो financial To sustain empowerment. at the moment, to जी. sustain और them, जो their livelihood. हम जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं और फैशन काउंसिल की बात करते हैं और एम्पावरिंग पाकिस्तान की और राइजिंग पाकिस्तान और ये बहुत सारे मूवमेंट्स हैं. आई वुड लाइक ऑल दो स्टेक होल्डर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प फैशन गेट बैक ऑन इट्स फीट राइट नाउ इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली, बिकॉज एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है इसका, और दूसरी चीज़ ये है कि आई वुड रीइटरेट कि एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल हम लोगों का कनेक्शन है. जितना मर्जी हम डिनाई करें, मुझे ईद पे नए कपड़े पहनने हैं, बेशक मैं अपने घर में ही बैठूं वो पहन के. आई वांट न्यू क्लोथ्स ऑन ईद. एंड मोहसिन We आपके want पास to क्या feel होंगी? good. आई वुड लाइक टू वेयर पिंक ट्री फॉर ईद. आओ जरूर आओ and inshallah we'll soon be releasing our हमारे Eid collection part में पहले रिलीज किया नगीन शाह. Now Hadia is working on a huge big PDF जिसमें पूरा Eid collection जो है मौजूद है. जी We'll soon be releasing them. देखो we are playing our part. जी Okay, now everyone else has to rise to the occasion and start playing their part and keep on playing. इस वक्त जो है ना sustenance सबसे important है. Survival is the most thing. And जी. can और I tell you मैं something? तो दोबारा ये कहूंगी, इससे पहले कि आप बात खत्म करें, मैं दोबारा ये कहूंगी कि when we talk about big events that we've seen in the near future, whether it's emerging Pakistan or whether it's TDAP facilitated events, Trade Development Authority of Pakistan, आप जहां जहां दुनिया में फैशन डिजाइनर्स को लेके जाते रहे हैं सिर्फ एक ग्लैमर का देने के लिए फैसेट, ये वो लोग हैं जो मिनिस्ट्री लेवल पे हैं जिनको चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और हेल्प करें उन डिजाइनर्स की और इन अच्छा. ब्रांड्स की. And can I tell you, Corona, during Corona and post Corona, एक वो है ना Darwinism है कि survival of the fittest. I don't think survival of the fittest will be applicable now. It will be the survival of the kindest. क्योंकि इस वक्त हमें compassion, empathy और kindness की बहुत जरूरत है. और मतलब ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी इन चीजों से ड्रिवन होनी चाहिए कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर. उनको आप भीख के तौर पे राशन हम कब तक देते रहेंगे, कब सस्टेन करेंगे? सो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ फिश वी शुड टीच देम हाउ टू फिश. वो जो पुराना वो बोला है कि हम उनकी सस्टेनेंस, और वो ऑलरेडी काम करते हैं. और ये सिर्फ फैशन का ही नहीं है, ये मुख्तलिफ और जगहों का भी है. बहुत फेमस चाइनीज proverb है ये तो, कि feed a man for a day and give him a fish, and feed a man for a lifetime and teach him how to fish. ये कुछ Absolutely. that is something like that. बिल्कुल. बिल्कुल. But हाँ. on that note, we have to wrap up the discussion, and I think that अरे तुम हमेशा छोटी सी बात करती हो, मुझसे ज्यादा तो मौका नहीं देती बातें करने का. भी तो मेरे दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है. भड़ास हम निकालेंगे फिर एक और कॉन्वर्सेशन में. ये हमारा मकसद था कि लोगों को ये दिखाना, छोटा सा विंडो, के भाई फैशन इज नॉट जस्ट अ लग्जरी, इट्स नॉट No, जस्ट it's not. It's a necessity. नेसेसिटी. फाइनेंशियली भी हमें इसको हेल्प करना है एंड हमें अपने आप को भी सेम रखना है. इट्स पार्ट ऑफ आवर सैनिटी, इट्स पार्ट ऑफ आवर डीएनए. Yeah, So we have to yeah. recognize that and be responsible, be aware, make conscious decisions. Don't buy like crazy people. Buy sensibly. Be a discerning buyer and stay safe and stay local. Support your own people, जी, your own artisans, your जी. own work. जी, मुझे अगर आज शनेल का मास्क मिले ना, फेस मास्क जिसपे शनेल का, मैं जरूर खरीदूं. मैं तुम्हें बना दूंगा पिंक ट्री का मास्क. ओके, गोटे वाला. खूबसूरत सा. You want embroidered, you want gota, you want block print, say whatever. ठीक है, डन डन. आप मुझे ईद पे देखेंगे पिंक ट्री का मास्क पहने हुए अपने करारे के साथ. ठीक है मोहसिन, it was great talking to you. I hope that people listen to what we had to say, and I have to apologize for Mohsin's camera quality because इनका कैमरा साइड से डैमेज हुआ है और ये ऐसे ही है. और ये बता दो कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती और मेरे क्या फोन टूट के इसका प्रोटेक्टर जो है ना वो बिल्कुल एक वो वेब बना हुआ है
और मुझे बिल्कुल हाथ पांव खुल जाते हैं बस ठीक है, टेक्नोलॉजी। आप कपड़े बनाते रहें और फोन टूटने दें बेशक। चलो ठीक है, हाथ का काम, ठीक है ना। ओके और ओके। वैसे भी आमना, मैं कहता हूँ ना, मुझसे मर्दाना काम करने को ना कहो, दुर्दाना काम सारे में कर। ठीक है, it makes sense. It absolutely makes sense. It was great talking to you. ओके, We'll continue this conversation privately. Okay. चलो ठीक है, बाय Bye bye. बाय।